line got issue, and that was the reason why this happened. Now we are back live. Oh, so let's hello, hello. Guys, I hope you are able to hear me, right? Is the audio fine now? Well, it's causing this problem. Just let me check it once again. Some issue. We'll just wait for someone else to join just a second. Okay, checking the audio. Hello, 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 hello. I hope the audio is properly audible now.
Okay, so we were not getting the reverse audio. That was the issue. That's fine. We can start. We can start. So, welcome back, everyone. This is Akash, and today we'll be going for another informative and engaging live session. Today, we are going to explore the Cisco's Discovery Protocol, the CDP. Okay, and this particular topic is a very vital protocol in networking, especially for those who are managing the Cisco devices. So, first and foremost, I want to give a big shout out to all the regular viewers and subscribers, every one of you who are supporting us, and your enthusiasm, that is the only thing that is keeping us to go forward. If you are new to channel, so please make sure that you are hitting that subscribe button and tap the bell icon so that you can get notified about the latest content. All right, let's get started. I just want to make today's session as interactive as possible. So just like every time I'm saying, please feel free to drop the questions and in the comments in the chat. I'll be keeping an eye on it and addressing your queries throughout the session. So let's make it a two-way conversation. For those who are joining us for the first time, um, let me introduce myself. This is Akash Nigam. I'm a CCSI certified CCNA plus CCNP enterprise certified professional. I currently work towards the infrastructure domain in Training Basket. I lead a fantastic team of trainers, and together we strive to provide you the most relevant and practical insights to help you excel in your networking career. Now, let's talk about what we have in plan for today. So, we will be diving into few topics like what exactly is CDP, what is CDP, okay, and what are its importance, why does CDP makes so relevant to the industries. Second thing that I'll highlight for you all would be how CDP works, the mechanics behind CDP and how it helps in network management. That is something that we need to understand. After this, I'll help you all to configure and verify the CDP on Cisco devices because nowadays, initially we were doing the theoretical and the calculative parts, but now it is the practical learning that has started. So from now onwards, I'll suggest every one of you to start operating over to your laptops and doing the labs as well. Configuration and verification. We'll be doing the both of the things. Other than that, some real world use cases, as well as some troubleshooting tips also, like because practical applications and common issues that anyone can encounter along with the solutions, those things will be here. Before we dive into the details, let's take a quick poll. How familiar are you all with CDP? If there is anyone who is a beginner, so just tell me because it will help me to tailor the content to your needs. I feel I won't be getting that fast replies, so let's start from the beginner level itself. Okay, so let's start with the basic, right? What exactly is CDP? Guys, CDP stands for Cisco Discovery Protocol. Cisco Discovery Protocol is basically a layer 2 protocol. And do remember, being a layer 2 protocol never means assume that it will only be available over to the switches. Routers also use CDP. Any particular Cisco device will be capable of executing CDP over to it.
Cisco switches and routers both support CDP. So what exactly it does, guys? This particular layer 2 protocol has been developed by Cisco, okay, and it basically helps the network devices to identify each other and share information. Imagine you're a network engineer, okay, a network administrator, and you're managing a large number of devices. In general, CDP will allow you to gather important details about connected devices, such as the device identifiers. Um, if there is any layer 3 address or the IP address, then interface information, as well as the platform informations. Because if for any specific device, if you have all these informations, you are already aware of what the device is. This basically makes very easy for us to map the entire network topology and troubleshoot the issues. Okay, let me tell you one more fun fact about CDP. Do you know? CDP initially was introduced in 1994. Yes, and despite being around for so long, it remains a crucial tool in the arsenal of network administrator. Can you believe that? If you have had any interesting experience using CDP, please feel free to share them in the chat. I'd love to hear stories too. Now, now let's move on to how CDP works. Okay, guys, remember CDP operates on two what layer? The data link layer, layer 2. Okay, so operating at layer 2, um, always remember it is Cisco's proprietary protocol also. Let me properly write it out. Sorry for this. Yeah. So CDP operates as data link layer, and it is a Cisco's proprietary protocol. Which means it's specifically designed for Cisco devices. Here, what happens is, in order to identify your neighbors, any particular Cisco device, it will send out some CDP messages. So the frequency of sending out these particular CDP messages is basically termed here as the periodical transmission. Okay, so Cisco devices send out these CDP messages periodically, and it is sent out with the help of a multicast address. Whereas from now onwards, every particular protocol has an individual set of some informations that you have to remember. So please ध्यान रखिएगा. Now, ये बेसिकली जो मैसेजेस होते हैं सीडीपी के जिनको मल्टीकास्ट किया जाता है, इन मैसेजेस के अंदर कुछ खास इन्फॉर्मेशन होती है डिवाइस के बारे में, लाइक द होस्ट नेम ऑफ द डिवाइस, डिवाइस का होस्ट नेम क्या है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, वो किस पोर्ट से कनेक्टेड है, कौन सा डिवाइस है. Every particular information can be seen over to this particular message. दूसरे डिवाइसेस अगर सेम नेटवर्क सेगमेंट में हैं तो वो भी इन मैसेजेस को पढ़ सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को अकॉर्डिंगली अपडेट कर सकते हैं. गाइस, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए साथ में ही फॉलो करते हुए, सो प्लीज search for this particular thing and do let me know. The question is,
Do you guys think that CDP can be used to gather information about non-Cisco devices? What is your answer? Do drop in the chat. I'll definitely check it out. Basically, the answer to this will blindly be no, right? Because being a Cisco's proprietary protocol, it cannot support the non-Cisco devices. But yes, for non-Cisco devices, we do have another set of protocol available, which is an open standard protocol. And so the particular protocol that will help you to fulfill this particular requirement would be Link Layer Discovery Protocol, LLDP. We'll be studying about LLDP. So while CDP is primarily for Cisco devices, there is a similar protocol which is called Link Layer Discovery Protocol, LDP, that works with devices from different vendors. Very soon we'll be touching on that too in the future session. Presently we'll be continuing with the CDP only. Okay, so let's get a breather of what all things do we have revised till date. What have we touched? Cisco Discovery Protocol. It is layer 2 protocol, layer 2 and Cisco's proprietary. Just do remember, um, the particular type of the frame that CDP uses, that particular frame is called as the snap frame. Okay, snap is a type of a frame that is supported by Ethernet standards, okay, ATM standards, HDLC, frame relay, and so on. So as far as snap is supported by these particular standards, CDP is also supported to all these particular standards. But presently the dominant technology would be the Ethernet. So we'll be learning about the Ethernet technologies. So it is a snap type of frame that CDP uses. CDP is sending out the CDP messages I told you, right? Which is being multicasted. Basically, those particular messages are called as the hello messages. So CDP sends hello messages to identify neighbors. देखिए नेबर्स मतलब सिस्को डिवाइसेस ही हो, ठीक है? तो नेबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सीडीपी क्या करता है? हेलो मैसेजेस भेजता है। एंड हेलो मैसेजेस भेजने की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है ऑफ 60 सेकंड्स। दैट मींस इट सेंड्स आउट द हेलो मैसेज इन एवरी 60 seconds. Just a second, please. Why is it getting loud? Yeah. And one more thing you should know,
CDP sends out these hellos, right? ये जितने भी हेलो मैसेजेस CDP भेजता है, ये नेबरिंग सिस्को डिवाइसेस के पास जाते हैं। नेबरिंग सिस्को डिवाइसेस इन हेलो मैसेजेस को कुछ वक्त के लिए ही होल्ड कर सकते हैं। उसे कहा जाता है CDP का होल्ड डाउन टाइमर। So CDP sends hello messages with an associated hold down timer of 180 seconds. So CDP has 60 seconds of hello timer and 180 seconds of hold down timer. इसका मतलब क्या होता है? आइए देखते हैं। फर्ज करो आपके पास एक दो सिस्को स्विचेस है। Switch 1 which is connected to switch 2 and ये connected है fast ethernet 0/1 और fast ethernet 0/4 के थ्रू। Now अगर CDP के हेलो मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं, राइट? सो फर्स्ट करो कि मैं सिर्फ आपको ना स्विच 1 के नज़र से दिखाता हूँ। देखो, assuming switch 1 has sent out a hello message. सो ये हेलो मैसेज फर्स्ट इनिशियली 0 सेकंड पे जाएगा जब CDP इनेबल किया गया होगा। देन पीरियडिकली इट विल बी सेंट आउट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 सेकंड्स। दैट मींस हर एक मिनट में ये हेलो मैसेजेस जाते रहेंगे। सो जैसे ही CDP का हेलो मैसेज स्विच 2 तक पहुंचेगा, स्विच 2 अपनी CDP नेबर टेबल में स्विच 1 की एंट्री रखेगा। स्विच 1 मुझसे कनेक्टेड है विद फास्ट इथरनेट 0/4 एंड स्विच 1 का फास्ट इथरनेट 0/1 पोर्ट मुझसे कनेक्टेड है। इस तरीके से पूरी नेबर टेबल इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी। इस एंट्री को स्विच 2 अपने पास स्टोर करके रखेगा फॉर नेक्स्ट 180 सेकंड्स। अभी जैसे ही अगला 1 मिनट रिड्यूस होता है, with the reduction of next 1 minute, this timer must have reduced to 120 seconds. ठीक है, 120 सेकंड पर वापस से स्विच ने हेलो मैसेज भेज दिया। आपका ये 120 सेकंड्स का टाइमर वापस से रीसेट होकर के 180 सेकंड्स पे पहुंच जाएगा। सो ये है, यहाँ पर अगर आप नोटिस करो, अगेन 60 सेकंड्स बाद फिर से एक हेलो मैसेज जाएगा। ये टाइमर फिर से 180 आ गया था, अगेन रिड्यूस होकर 120 गया होगा। फिर हेलो मैसेज आने के कारण अगेन ये 180 पे रीसेट हो जाएगा। सो डोंट यू थिंक ये हेलो मैसेज आपके CDP डिवाइसेस के लिए, नेबरिंग डिवाइसेस के लिए एक कीप अलाइव की तरह काम करते हैं? एंड फर्स्ट करो दिस 180 टाइम स्टैम्प वाला जो हेलो मैसेज है, ये सेंड होते वक्त आपके बीच का ये लिंक ना किसी वजह से डाउन हो गया, जिस कारण से आपके प्रोपगेशन नहीं पहुंच पाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन इज स्विच 2 का CDP नेबर टेबल 120 सेकंड के टाइमर से रिड्यूस होता रहेगा 120 to 110, 100, 90, 50, 30, 10, 0। एंड जैसे ही आपका नेबर टेबल का होल्ड डाउन टाइमर 0 सेट होता है, स्विच 2 स्विच 1 की इस एंट्री को अपनी नेबर टेबल से फ्लश आउट कर देगा, assuming that switch 1 is dead in the network. So this is how the hello and hold down timer help in the CDP. इस बात करेगा CDP इसके hello and hold down timer की and CDP के behavior की. So let me just show you one thing.
सिस्को डिवाइसेस पे CDP बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है। आप CLI पर जा करके कमांड यूज़ कर सकते हो शो CDP। ये कमांड आपको वेरीफाई कराएगी कि CDP का हेलो टाइमर क्या है, होल्ड डाउन टाइमर क्या है एंड साथ ही साथ CDP अगर इनेबल है तो कौन सा वर्जन इनेबल है CDP का, ये भी आपको वेरीफाई करवाया जाता है। दिस इज क्लियर। अगर मुझे नेबर्स देखने हैं तो मैं कमांड चला सकता हूँ शो CDP नेबर्स कमांड, बट प्रेजेंटली मुझे कोई नेबर नहीं दिखेगा बिकॉज आई हैव कनेक्टेड दिस राउटर्स एंड राउटर्स के इंटरफेसेस बाय डिफॉल्ट डाउन स्टेट पे होते हैं। तो मुझे यहाँ पर राउटर्स के इंटरफेसेस को अप करना होगा। देखिए, अगर आप अभी CLI पे जाकर चेक करते हो राउटर्स के शो CDP, तो CDP तो चल रहा है बट शो CDP नेबर्स में इनके पास कोई भी नेबर नहीं दिखेगा। जैसे ही मैं इनके इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस रेंज गीगाबाइट ईथरनेट 0 एंड 1 नो शट, जैसे इनके इंटरफेसेस को अप किया है मैंने एंड अगर मैं अभी बाहर आता हूँ शो CDP नेबर्स, आप देख सकते हो नेबर्स दिखने लग गए। जस्ट टू सेग्रीगेट द नेबर्स लेट्स चेंज द होस्ट नेम्स ऑफ द डिवाइसेस ताकि हम उनको पहचान सकें। होस्ट नेम कमांड लेकर के मैं इसको स्विच टू कर देता हूँ। अभी बस मुझे वेट करना होगा ताकि राउटर अपनी नई हेलो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करे और डिटेल्स को अपडेट कर ले। तो मैं टाइमर को सिस्को पैकेट से पास फॉरवर्ड कर देता हूँ। अभी हो गया होगा, आइए चेक करते हैं। ना सेम अपडेट्स मुझे राउटर्स के नाम पे भी करना होगा बिकॉज इट विल शो ओनली द होस्ट नेम एज राउटर ओनली। नेबल configure terminal host name R1 and similarly ये जाएगा मेरे R2 configure terminal host name R2। इसके इंटरफेस को कर लेते हैं। इंटरफेस रेंज gigabit 0 and 1 no shut। Guys, now see what is the exact use of CDP। फर्स्ट कीजिए, मेरे पास सिर्फ एक फिजिकल टोपोलॉजी है एंड मुझे नेटवर्क का लॉजिकल डायग्राम चाहिए ताकि मैं उसको डिस्कस कर सकूं। इन सच केसेस CDP हेल्प्स आउट। CDP का एक मेजर काम जो होता है दैट इज टू मैप द नेटवर्क। आइए देखते हैं CDP किस तरीके से हमें मैप करने में हेल्प करता है। लेट्स सी। आमतौर पर आपको इस तरीके का एक ग्राफ मिलेगा अब इससे मैं लॉजिकल टोपोलॉजी कैसे बनाऊँ। तो फॉर दैट रीजन मैं आपको यहाँ पर फॉलो करके दिखाता हूँ किस तरीके से इसको फॉलो किया जाता है। मैं यहाँ पे ब्लैंक टोपोलॉजी के अंदर वर्क करके आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगा जो मुझे यहाँ पे आउटपुट में दिखाई देंगे। तो लेट्स क्लिक ऑन एनी रैंडम डिवाइस। ओके, दिस इज राउटर 0। तो सबसे पहले मैं मैपिंग के लिए यहाँ पे राउटर 0 को रख लेता हूँ। ओके, नाउ राउटर 0 पे आकर के मैंने कमांड चलाया शो CDP नेबर्स कमांड। यहाँ डू लगाना पड़ेगा बिकॉज हम इंटरनल मोड पर है। तो मुझे दिख रहा है कि मेरे राउटर 0 से स्विच 1 कनेक्टेड है। ओके,
केपेबिलिटी, प्लेटफॉर्म स्टेटस, पोर्ट आईडी, कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है? हम दोनों ही कनेक्टेड हैं 5.0/2 के। हुई अभी हाँ भी राइट में जा करके दूसरा डिवाइस सेलेक्ट किया। दिस इज राउटर 1 R2. Okay, that was R1. My bad. Yeah, this was R1. Now we are at R2. Definitely R2 enable. Now do show CDP neighbors. Okay. R2 को दिखता है कि R2 से भी स्विच 1 और स्विच 2 कनेक्टेड है, बट R2 के इंटरफेस कौन कौन से हैं जो स्विच 1 और स्विच 2 से कनेक्टेड है? R2 का इंटरफेस जो स्विच 1 से कनेक्टेड है वो है गीगाबिट ईथरनेट 0/0/0, और स्विच 2 से कनेक्ट होने वाला इंटरफेस है गीगाबिट ईथरनेट 0/0/1। स्विच 2 अपने इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 से कनेक्टेड है, एंड सिमिलरली स्विच 1 भी अपने इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 से कनेक्टेड है। सो गाइस, नाउ यू कैन सी यहाँ पर मुझे मिल चुकी है मेरी लॉजिकल टोपोलॉजी which is exactly similar to what we have drawn or we have in packet tracing. See, this is one of the key tasks that that basically CDP does. अच्छा, CDP by default तो enable होता है, तो इसको disable कैसे करेंगे? So guys, to remember, to disable CDP, आप कमांड चला सकते हो no CDP run, बट ध्यान रखिएगा इस वक्त जैसे ही मैंने ये कमांड चलाया है सिस्को डिवाइस के सभी इंटरफेसेस ग्लोबली CDP डिसेबल हो चुका है। CDP is not enabled. एनेबल करना है तो आप कमांड चला सकते हो CDP run. बट द केस है हो सकता है कि ये डिवाइस जो है मेरा ये सिस्को नहीं, ये एक जूनिपर्स का डिवाइस है, जूनिपर्स राउटर। जूनिपर्स राउटर पर CDP तो नहीं चल सकता, सो लेट मी डिसेबल CDP हियर, नो CDP रन। मैं यहाँ पे CDP डिसेबल करके इसको एक जूनिपर्स डिवाइस बना रहा हूँ। नाउ गाइस, अगर मैं अभी शो CDP नेबर्स कमांड चलाता हूँ तो स्विच 1 और स्विच 2 को कोई भी नेबर जूनिपर्स डिवाइस वाला नहीं दिख सकता। इसी सिर्फ R1 दिख रहा है, राउटर 0 जो जूनिपर्स डिवाइस है ये नहीं दिखेगा। चलिए इसका नाम अंदर बता देते हैं। ओके, तो अभी क्या किया जाए? ऐसे केसेस में आप अपने डिवाइसेस पर इनेबल करते हैं प्रोटोकॉल जिसे कहा जाता है LLDP विद द कमांड LLDP रन। अगर मैं आपसे LLDP की बात करूं तो ध्यान रखिएगा LLDP का फुल फॉर्म हम थोड़ी देर पहले देखा था, लिंक क्लियर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। अब LLDP की बात करें तो LLDP भी आपका एक लेयर 2 डिस्कवरी प्रोटोकॉल है, बट LLDP ओपन स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, ओपन स्टैंडर्ड की बात करें तो जब भी मैं ओपन स्टैंडर्ड की बात करूँ आपके दिमाग में डायरेक्टली IEEE हिट करना चाहिए। ओके, एंड ये IEEE का कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करेगा?
IEEE का स्टैंडर्ड 802.1 AB स्टैंडर्ड। ओके, अच्छा यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हेलो एंड होल्ड टाइमर बदल जाते हैं। हेलो एंड होल्ड डाउन, यहाँ पर हो जाएगा आपका हेलो टाइमर 30 सेकेंड्स एंड होल्ड डाउन इज 120 सेकेंड्स। कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है? आप अपने डिवाइस पर एलडीपी रन चला के एलडीपी इनेबल कर सकते हो, बट इंटरफेसेस से ट्रांसमिशन निकालने के लिए आपको अपने इंटरफेस पे जाना होगा। मैं सभी इंटरफेस पे एक साथ कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। LLDP transmit so that they can transmit the LLDP packets and LLDP receive ताकि वो LLDP मैसेज को रिसीव भी कर सकें। सिमिलरली आपके इन डिवाइसेस के पोर्ट्स पर अभी यहाँ पर देखो सिस्को डिवाइसेस, राइट, बीइंग सिस्को डिवाइसेस, यहाँ पे क्या चल रहा है देखिए, नोटिस करिएगा। प्लीज यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल CDP चल रहा है, राइट। बट व्हाट आई वांट इज कि यस, यहाँ पर CDP चलना चाहिए, बट फॉर दिस पर्टिकुलर कनेक्टिविटी जो कि मेरी जूनिपर राउटर से हो रही है, I don't want CDP to run. This should be LLDP. That means इस पर्टिकुलर राउटर पे CDP और LLDP दोनों प्रोटोकॉल्स को एक साथ रन करना होगा, बट इस इंटरफेस पर LLDP रन करेगा एंड इस इंटरफेस पर CDP रन करेगा। आई होप दिस इज क्लियर, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। सो लेट्स स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन। मैं स्विच पर जा करके CDP के साथ साथ LLDP भी इनेबल कर देता हूँ। फिर मैं देखता हूँ इंटरफेस जो कनेक्टेड है वो है फास्ट एक्सचेंज 0x1, उस इंटरफेस पे जाते हैं, LLDP transmit, LLDP receive। नाउ लुक गाइस, अगर मैं अभी देखता हूँ यहाँ पर do show LLDP neighbors, you can see I can see my router as a neighbor here. I hope this is clear. Yes, this was a very short session of today, right, जहाँ पर हमने CDP as well as LLDP के बारे में पढ़ा। I'm penning down few key commands for you जो आप यूज कर सकते हो। हम चलते हैं कोडों पे, यहाँ पे टाइप करना इजी रहेगा आपसे। ग्लोबली इनेबल होने से the command is CDP run and disable करने के लिए you will use the command no CDP run। इसी इंटरफेस पे अगर आपको तो you can do it on per interface basis। आप इंटरफेस पर जाएं and by reaching out to your interface just use the command no CDP enable। this will disable on per interface basis to disable the
only command will be CDP enable. There's एक और की कमांड होता है which is show CDP entry asterisk. Asterisk basically tells you about all the enabling devices. That too key details. Show CDP. बाहर आ जाता है. Show CDP entry star. See, specific information in depth. Exactly hello message में क्या जाता है वहाँ पे यहाँ दिखाई दे जाता है. So this is show CDP entry star. And if in place of star अगर आप यहाँ post name लिखते हो, let's say मैंने लिखा R1 या मैं लिखता हूँ R0. R0 को हमने हटा दिया, तो R1 चेक करते हैं हम. जैसे मैं R1 लिखूँ, अब देखो खास R1 का इन्फॉर्मेशन दे दिया. अगर मैं यहाँ लिखता हूँ शो LLDP entry R0 junipers. Okay. I think LLDP में कमांड let's see क्या है. चेक करते हैं. Show LLDP neighbors. Okay, it has only neighbors command. No worries. LLDP में ये कमांड का show CDP entry. आपने कमांड चलाई थी show CDP entry asterisk. इसकी जगह आप चला सकते हो show CDP neighbor detail. Both commands can give the same output. Okay, so both the commands have the similar output. Neighbors details. Okay, now what you have to do is आप लोगों के लिए टास्क क्या होगा. अभी आप लोगों को अपने डिवाइसेस पे LLDP completely enable करना है. दो टेस्ट to enable LLDP entirely on the devices. इसके बाद mix of CDP and LLDP. Okay, so this is what you have to do at your home. If you guys face any challenge, do drop in the comment box. मैं definitely आप लोगों को इसके लिए lab files का setup जरूर share करूँगा ताकि इस files को डिजाइन करके and आप लोग उसको रेफर कर सकते हैं. Okay, so we are done for today. On that note, we will be closing this session now. Thank you so much everyone for joining today's session over CDP and LLDP. I hope you found it informative as well as useful. And even if you have any more questions or topics that you would like us to cover in future sessions, please leave us a comment below. And do not forget to like this video and subscribe to our channel for more such content on networking technologies. Until next time, this is Akash.